Good evening, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to discuss another topic. Again, thanks to Cambridge Boxhill for creating this lovely speaking. So basically, the task is about that you are in a clinic. Your patient is 51 years old and has had a lesion removed from his hand following a diagnosis of squamous cell carcinoma. So the patient was having squamous cell carcinoma. There was a lesion which was removed, and he is 51-year old. He was overexposed to the sun in his her teens. You have come to remove the stitches. So that was the reason, that overexposure to sunlight. So now you are a nurse, and basically you have to attend the patient. Confirm reason for visit: removal of stitches, wound cleaning, redressing, find out if the patient has any concerns. So basically the task में ना थोड़ी सी गलती है. There is bit of a mistake. I'm not saying in a negative way, but you have come to remove the stitches. ऐसा लगता है कि हम पेशेंट के घर पे गए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. ऐसे ही कह सकते हैं कंफर्म रीजन फॉर विजिट. तो ये भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम पेशेंट के पास गए हैं, विच एक्चुअली हैज नॉट हैपेंड, क्योंकि हमें जो सेटिंग दे रखी है वो क्लिनिक दे रखी है. सो बेसिकली ऐसा पेपर में नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हमें सेटिंग क्लिनिक दी है तो हमें इसी वर्ड पे ज्यादा गौर करना चाहिए. बट अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज गलती से हो सकते हो कि यू हैव कम का मतलब जैसे कि आप उसके घर गए हो. कंफर्म रीजन फॉर विजिट, ये भी ऐसे ही लग रहा है कि हम उसके घर गए हैं, पर जबकि हमें सेटिंग क्लिनिक दी है. सो देर इज बिट ऑफ अ थिंग, बट डोंट वरी, आप क्लिनिक के हिसाब से चलो. जो मेन सेटिंग आपको दी है, आप ये समझो कि आपका ये क्लिनिक है, पेशेंट इस रूम में है, तो आप समझो कि आप इस रूम में हो. तो यहाँ से आप यू हैव कम टू रिमूव द स्टिचेस. तो आप इस रूम में गए पेशेंट के पास, यहाँ पेशेंट है. एंड ऑल्सो कंफर्म रीजन फॉर विजिट, तो आप इसी विजिट को कंफर्म कर रहे हो दैट आई हैव कम हियर टू रिमूव दिस. ये आप कम्युनिटी नर्स हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए था. बट एनी हाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू स्टफ. अगर आपकी ग्रामर अच्छा है तो ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, आपको लग सकता है कि आप उसके घर गए. तो अवॉइडिंग दिस थिंग, मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ. मैं यही मान के चल रहा हूँ हम क्लिनिक में है. तो नर्स पेशेंट के पास आई है. सो नर्स हैज कम टू द पेशेंट एंड बेसिकली वी आर इन द क्लिनिक इटसेल्फ. सो रीजन बताना है कि बेसिकली वी आर हेयर फॉर द रिमूवल ऑफ स्टिचेस, वुंड क्लीनिंग एंड रीड्रेसिंग. तो आपके स्टिचेस को रिमूव करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे, और आपकी रीड्रेसिंग, ड्रेसिंग को दोबारा करेंगे. पेशेंट से पूछेंगे डू यू हैव एनी कंसर्न्स, तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना. तो ये चीजें आपको पहले लिखनी है. डू यू हैव एनी कंसर्न्स, ऐसे लिखना. ये पेपर में लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बनाने मुश्किल होते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर. और अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नर्सिस और डॉक्टर्स के टास्क में कोई खास फर्क नहीं होता. अगर आप यहाँ पे अपने आप को डॉक्टर मान लो तो आप ये भी सेम ही टॉपिक है दैट यू हैव कम टू द पेशेंट टू रिमूव द स्टिचेस. गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. सो अगेन चाहे नर्स हो या फिर आइदर इफ यू आर अ नर्स और इफ यू आर अ डॉक्टर, सो दोनों ही केसेस में इंफॉर्मेशन अबाउट, तो डॉक्टर भी बता सकता है इट इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर विच इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज सन. If we get exposed to sun, there is ultraviolet radiation that can cause this and this thing. Reassure the patient about effectiveness of the surgery. So again, आपको reassure करना है कि आपकी सर्जरी बिल्कुल effective है and lesion has been removed. जब भी प्रेजेंट में पैसिव वॉइस बनाना है, आपके द्वारा रिमूव हुआ, यही हम आपको राइटिंग में सिखाते हैं. लीशन हैज बीन रिमूव, पैसिव वॉइस लगाना सीखो, तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में आपके मार्क्स बढ़ेंगे. सो ऐसी चीजों का आपको पहले लिख देना चाहिए. अगर आपकी ग्रामर पे कमांड बन जाती है बाय द टाइम यू टेक योर एग्जाम, दैट इज ऑसम. अगर आपकी ग्रामर में जैसे आपको राइटिंग में याद रहता है पर स्पीकिंग में नहीं रहता, तो पहले लिख दो. कैंसर इज अनलाइकली टू स्प्रेड, तो यहाँ पे सिर्फ इज लगाना है. तो आप पेशेंट को बता रहे हो कि मैं आपके लिए आया हूँ, और पेशेंट से पूछेंगे डू यू हैव एनी कंसर्न, तो पेशेंट बताएगा मुझे कंसर्न है, मुझे कार्सिनोमा कैसे हुआ. तो आप बताओगे कि ऐसे ऐसे आपको कार्सिनोमा हुआ, अब सर्जरी आपकी सक्सेसफुल है और अब स्प्रेड नहीं हो सकता. तो आपको स्किन को मॉनिटर करते रहना है. कोई नए स्पॉट्स आते हैं तो आपको बताना है, और रेगुलर डॉक्टर को आपको चेकअप करना है. तो ये हो गए हमारे सजेशंस. तो यानी सजेशंस चलते हैं, आई सजेस्ट यू, या फिर यू शुड, या यू नीड टू, ऐसे भी बोल सकते हो यू नीड टू, और आई रिकमेंड यू, ऐसे भी बोल सकते हो आई एडवाइज यू. तो दीज आर द वेज. तो इसको मैं पहले लिख दूंगा कि ये वाली लाइंस मुझे यहाँ पे यूज करनी है. पेपर में यू विल गेट 3 minutes टू राइट ऑल दीज वर्ड्स.
Resist request for the information about further surgery. तो patient to speak with the doctor. Resist का मतलब है deny, एक तरह से रुकना है. So resist का मतलब resist request for information about further surgery. So basically patient will ask for further surgery and you have to resist this request that you do not need any further surgery. And example, patient to speak with the doctor. So there is no requirement to talk with the doctor at the moment. Doctor has already told you that there is nothing to worry. So मैं ये भी लिख देता हूँ, ये थोड़ी अजीब लाइन है. डॉक्टर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज नथिंग टू वरी. ये थोड़ी अग्रेसिव लाइन है, इसको बहुत प्यार से बोलना. देयर इज नथिंग टू वरी, तो आपको डॉक्टर को विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो इस लाइन को बड़े प्यार से बोलना, पोलाइटनेस के साथ, ध्यान से, कि उसको बुरा ना लगे पेशेंट को. एट लास्ट ओईटी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द पेशेंट इन द मोस्ट पोलाइट. देन प्रिवेंशन के लिए आप बताओगे सनस्क्रीन, लोशन, ये भी शुड में चलेंगे, शुड में. एंड आई सजेस्ट यू दिस एंड दिस. Find out about the patient's wound post surgery, any pain or discharge. So do you have any pain? ऐसे वैसे पूछ लो, do you have any pain or any discharge? तो patient बता देगा no, everything is fine. वो कहोगे that's fine, that is why we are saying surgery is successful and there is nothing to worry. ठीक है, इसको आप एग्जामिन भी कर सकते हो. ये क्वेश्चन पेशेंट से पूछ सकते हो, डू यू हैव एनी पेन, और ये एग्जामिनेशन में बता सकते हो कि कोई डिस्चार्ज नहीं है, बढ़िया चल रहा है, यू आर गोइंग वेरी फाइन, देयर इज नथिंग टू वरी. एम्फेसाइज रीजन फॉर रिमूवल ऑफ स्टिचेस नाउ, क्योंकि वुंड हील हो चुका है. सो आप ऐसी जगह पे अगेन प्रेजेंट परफेक्ट. बस पैसिव वॉइस और एक्टिव में ये फर्क होता है, जहाँ पे लीशन हैज बीन रिमूव्ड, ये काम पैसिव हमारे द्वारा, और वुंड अपने आप हील हुआ है तो वुंड हैज हील्ड. अगर आपको ये दो बातें समझ आती हैं, लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन. अगर आपको ये दो बातें समझ आती हैं कि एक्टिव का मतलब हैज हील्ड, हो चुका है, पैसिव का मतलब बीन लगा दो. Wound is healing well, there is nothing to worry as it has been assessed by the doctor. Typically 7 to 14 days में हम रिमूव कर देते हैं. सो आपका वो हो चुका है. एडवाइस ऑन आफ्टर केयर कि आपको वुंड को क्लीन रखना है, जो लीशन है वो सब कुछ अब क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, कवर्ड रखना है. एस्टेब्लिश पेशेंट कंसर्न, तो आप लास्ट में नाउ डू आई हैव द कंसेंट टू रिमूव द स्टिचेस, तो आप इसीलिए तो आए थे, मेन टॉपिक यही था. अगेन मैंने आपको हमेशा बताया फर्स्ट लाइन जरूर लिखनी है, फर्स्ट लाइन तो जरूर लिखनी है. So good morning. My name is Dr. Bhupesh. तो अभी मैं नर्स की तरह एक्ट करूँगा. So my name is Bhupesh. I am a nurse. क्लिनिक में है तो over here भी बोल सकता हूँ I am a nurse. नहीं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ I am a nurse. And I have come to change your dress. जो दिया है उसको बोल दो. That is the point. अब आपका टॉपिक बिल्कुल आसान हो गया. So before I am here to remove the stitches, to remove the stitches and to redress the wound. ऐसे लिख दो, पहले redress करने आए हैं और stitches को remove करना है. But before that, लेकिन उससे पहले I would like to know, do you have any concern? But before that, I would like to know. देखिए आपका टॉपिक पूरा तैयार हो चुका है. Before that, I would like to know. आपके पास 3 मिनट होंगे. ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे 3 मिनट्स में इतना सब कुछ तो लिखा जा सकता है. इतना सही तो है, देखो बस इतना सही लिखा है. That's it. Now अब देखो 5 मिनट्स का टास्क कैसे होगा. Good morning, my name is Bhupesh. I am a nurse and I have come here to remove the stitches and to clean your wound as well as to redress the wound. So, but before that, I would like to know, do you have any concerns? Well, yes, nurse, I am having concern. As you know, I had squamous cell carcinoma. And today I have come for the removal of stitches, but I'm really worried about the spread of the cancer because I have heard that normally carcinomas are kind of dangerous things. They are like kind of cancers only, and they can spread very easily. Okay, so first of all, don't worry. I will explain you each and everything in a very nice way. So first of all, please calm down and have a seat. So, okay, first of all, I would like to tell you that you had squamous cell carcinoma, as you already know it. So there was a lesion that has already been removed from your hand. So now the lesion has been removed and there is nothing to worry. Is it all right? But nurse, how about its spread? Yes, the lesion has already been removed as I have just told you. And also I would like to tell you that cancer is unlikely to spread because it was in the early stages or it was in the benign phase. So there are no chances of spreading again. And also it has been a very successful surgery. So there is nothing to worry. But nurse, I am still worried about my condition and why did it happen? Okay, so let me tell you that squamous cell carcinoma, as I have already told you, it is a type of skin cancer and it is normally caused by the sun exposure
as sunlight has got a component which is known as ultraviolet radiations. So these radiations can cause cancers, and that is what has happened to you. Also, I can see from your case notes that you have been exposed to the sun during your teens a lot. So that can be one of the major reasons for having this kind of a cancer. Okay, nurse. So what to do now? Nothing, is just about taking care of yourself. As I have already told you that lesion has been removed, so there is nothing to worry. And you just need to take care of your skin, and also skin monitoring would be required at regular intervals. That means you should regularly visit the doctor for the checkups as told by the doctor. Also, you should keep on checking for new or changing spots. It is very important to observe your skin as well. Apart from this, I would like to tell you that everything is fine and there is nothing to worry. So do you have any other concern? Yes, nurse, I would like to know, so how could I prevent it? How about further surgery? I want to see the doctor. See, doctor has already told you that now there is nothing to worry. So please don't think about further surgery because it can lead to negativity. So I would like to tell you that you should stay positive. And at this point of time, there is no point of thinking about further surgery as you are completely fine. For the prevention, yes, you have to develop some habits when you go in the sun. Using sunscreen lotions before you actually expose yourself to the sun, and also wearing hats can be one of the best help. Also, do not go out, especially when the sun is really on its high. Means in the peak afternoon hours, you should not go out and try to avoid it. Also, when you go out, along with this, when you go out, it is very important for you to cover up the skin to prevent further damages. Is it all right? Are you understanding my point? Yes, nurse, I am. Well, that's great. And are you having any pain? No, nurse. Well, that's great. And also for the discharge, let me observe your mark. So, okay, your wound is healing well. So everything is fine. That is why doctor has assessed you that suture stitches can be removed. So we would like to remove the sutures now. So is it all right if I would remove the sutures now? Yes, nurse, if you think that's fine, of course it is fine. That's why doctor has recommended this thing and I have come here to remove the sutures only. So you are absolutely fine and there is nothing to worry. But yes, after the removal of the stitches, it is very important for you to keep your wound clean, covered and dry. It is very important. Have you understood everything? Yes, nurse. Okay, so here is your leaflet. It contains the information about how to take care of your wound after the removal of the stitches, and you should keep it clean, covered and dry. And I reassure you, there is nothing to worry as the lesion has been removed. Is it all good? Yes. Okay, then take care. And now I am removing the stitches. Okay. Yes. That's it. That is how you do the task. Exactly 5 minutes lage hain mujhe. Exactly 5 minutes. So that is how the task will go. Again, you should not get over dependent upon the patient. There is no point of getting over dependent upon the patient. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Thanks to Cambridge Box Hill for creating this magnificent original OET speaking sample question paper for the OET speaking task. And I am here to try my level best to teach you the best about how to execute the OET speaking in the best possible way. एक दो जगह पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है. अगर आपने नोट किया हो, मेरे से भी 3 लाइंस में लगातार also लग गया. I know it should not be repeated, but there are a couple of mistakes that happen while you speak. That is all right. Please accept the way. Of course, try to develop more things. Try to change yourself wherever you can. But exam mein fluency is the main thing. So be fluent, be confident. The loudness should be optimum as it's going to be audio recording. There would be no marks for the facial gestures. Examiner will not have any marks to give you. Your recording would be going to audio recording would be going to Melbourne. It would be assessed. So please understand your fluency, your confidence will play the key role in having a successful attempt with OET speaking. So again, take care of yourself and please try to listen this speaking again, maybe 3 times if you want to be the best. Thank you.